ICT and AI tools required for teachers in teaching and learning. So these are my outlines, wherein we would be discussing various digital platforms and the comparison of these platforms. Also some freely available open sources, and importance of AI tools in teaching and learning, which includes your GPT and the DALL-E, Canva, and there are many more. So I think participants are well familiar with the concept of online teaching and various platforms. Am I right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. This is Yes, because Yes. during COVID-19, there was no option for conducting classes other than online teaching. So during that period, we have seen the concept and the pros and the cons of online teaching. So what platform participants generally, or the mostly, what digital platform you were using for online teaching? Ma'am, Google Google Meet, Google Google Class, Meet है, Zoom Google है, Classroom. Zoom है, Zoom. Okay, okay. और MS Teams. MS Teams. Okay. So that's why I said that participants are already familiar with various digital platforms. I would like to say that the concept of online teaching is not new at all. Even before COVID-19, there was tremendous growth in online teaching in our education system in each and every field, whether it is area of language app or learning virtually or video conferencing tools or learning any type of software or language through online. So since it is already in practice, the concept of online teaching, and day by day, some new and advanced level digital platforms are available. But here today, we'll discuss 5 commonly used types of digital platforms and must see that for what purpose, what digital platform would be appropriate. So the 5 नहाने वाने में भी कई बार गिर जाती है, कपड़े में ही गई है वो. participants are requested to please mute yourself. All participants are requested to mute yourself, please. So 5 commonly used digital platforms, as just now participants have told me, it is Google Meet, Google Classroom, Cisco WebEx, Microsoft Teams, and Moodle. So as I said, one by one, we'll see the important features or important characteristics of each and every digital platform, starting from Google Meet. The previous name of Google Meet is Google Hangouts, and this is mainly used for video communication service. One more important point should be clear, like there are 2 versions of Google Meet. So the full version of Google Meet would be available for those users who are having G Suite account, right? For G Suite account holders, the full version of Google Meet is available. Otherwise, some basic features of Google Meet can be used for holding meetings, for conducting classes and all. And this provides the facility of screen sharing and your PPTs, your documents, your spreadsheet. And there are 2 ways for getting access to Google Meet. That is either by using web browser or by using installed app. So there are 2-3 technical terms I'm sure you are familiar with, but still I would like to know, are you familiar with what is the meaning of G Suite and your Android and your iOS app? Yes, Yes, participant? ma'am. Yes, ma'am. These are operating systems. Yes, ma'am. Okay, operating system. One is Apple's operating system, another is Google's operating system. So Android is your designed and developed by Google, and another one is Apple's. And the meaning of G Suite account is those who are having this, Google will allow them to use the customized version of
Google Meet, some special products of for documentation, for email, for contacts and all. So some organizations, colleges and universities may take G Suite account, so they'll get additional facility. This is the meaning of this G Suite. And as I said, either web browser or install app can be used. So if you are using any web browser, directly you can go to parent page or the home page of Google Meet and can hold meetings or classes. Otherwise, can do from installed app as well. Then there are for sharing a screen, two options like entire screen or window. At the moment, we are using Google Meet and I am sharing through entire screen so that each and everything happening on the screen would be visible to all participants. And a window meaning a particular application where are you working would be displayed. So just now I'm using this entire screen option of this. Then in call messages, like many participants are sending good morning and some more comments. So this can be done either individually or it may be sent to all participants. Similarly, the another option for attaching your files and the URL of web location can also be done in Google Meet. So this is the screen that shows how it appears in Google Meet if you are using mobile app. And of course, Android version, the appearance would be like that. Then we'll switch over to next digital platform, that is Google Classroom. This is a free web service, and its important feature, or must say the most important characteristics or attractive feature of this is to simplify creating, distributing, and grading assignments. This is the purpose of Google Classroom. Or we can say that this digital platform focuses on distributing and grading assignments. And of course, a few more features like sharing files between teacher and students. And by doing this, we can save time and paper and can create as many new theory and lab classes as you want, and distributing assignments, communicating with your students, and stay organized. In addition to that, one more feature of Google Classroom is teachers can keep the track on their students' performance, whether they have completed work or not, assignments or the project or whatever, whether they have done it or not, because this provides direct and real-time feedback and grades right in the classroom. So these four are the important or useful features of Google Classroom. So for getting access to Google Classroom, there are three possible ways. One is by using web browser, any web browser you can use. So participants, which web browser do you use generally? Chrome. Ma'am, Google Chrome and Chrome. Chrome. Google Chrome. Okay. Google Chrome and Firefox. Okay. Arun sir, what browser do you use? Mr. Arun is here. Okay, what about you, Neeraj Rai sir? Can't hear you. Google Chrome, ma'am. Google Chrome. Okay. So it seems mostly participants are using Google Chrome. So any web browser like here, this is the Google Chrome and Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Advanced Search. There are many more that can be applied for getting access to Google Classroom.
Another option for using Google Classroom is from your Play Store or your iOS store, download Google Classroom. And another easy way to get access is from Google applications. You can see this red color arrow. Click here, find Google Classroom, click here, and can start using this. So for that, once you have started your Google Classroom, you may create your classes or you can join any class. So for creating classes, like with this plus option, either create or join. For example, 3 different classes I have created, and the course code, title of the course, and the number of students are also mentioned here. So similarly, anytime, any number of classrooms can be created. So for that, click on create class. This window will pop up, and here you are supposed to write the name of the class, section, subject, and where you are conducting this class, the location of the room, or the room number maybe, because sometimes a hybrid mode of teaching can also be applied, wherein some students are sitting in class while the rest of them are online. So for that, here so many options that can be applied for creating classes. I've created 3 more classes for different subjects, as you can see here. And in the end of each and every class, there are 2 icons. One is wavy arrow, another is this rectangular box. Every time in the end of each class, you will get these 2 icons, that is wavy arrow and another is rectangular box. So who will tell me that what for these 2 icons are? Ma'am, one indicates For folder. rectangular box is for Rectangular, storage, rectangular boxes for file, Folder or storage folder. to add files. to add files. Okay. And what about that arrow? The second one? Send option, ma'am. The arrow is Am I for? audible? Yes, yes. Send option. This is share option, is it? Send, yes. Okay. So see what for these 2 arrows are. This one, your rectangular box, while clicking on that, you will reach to all folders or all files of this particular class in Google Drive. All your notes, your assignment, each and everything would be open in Google Drive for that class. That's why this is for each and every class. Have a quick look how it appears. The moment you will click on rectangular box, these are all my notes, subject by notes, or the assignments. So this will open in this folder or file, or this classroom, you can say. All files will be open in Google Drive. And the second one, which is your wavy arrow, this is for opening grade sheet of that class. This is consolidated grade sheet, which includes all marks for Viva, for sessional, for mid-semester, end semester, each and everything. A student's name and roll number would be there, and the complete grade sheet you can see. So this is the purpose of these 2 icons in the end of each class. Then another option is, let's say 2 teachers are sharing any theory or any lab course. In that case, co-teachers can also be added from this option, which is in red color. Click here, can add 2 teachers or 3 teachers. Similarly, students or participants may be added from this students tab. So whenever you want to create a class, click on this classroom. Similarly, for adding people, click here.
And for grades, click on this tab. There is one more tab that is stream. Okay. So what is a stream? Participants, can somebody tell me what is a stream? Humanities. The meaning of a stream, there is one tab of a stream. Sometimes in the bottom also you can get the symbol or the icon for a stream. I'll show it to you later on, but are you familiar that what for the stream is? Ma'am, Jeevan Kumar, sir. stream means Broadcast. live streaming, ma'am. Sorry? Live streaming. Live streaming, na, ma'am. Stream Live. means live Live. streaming. Okay. Jeevan, sir, would you like to tell me? Have you ever used this? मैम गूगल क्लासरूम में जो स्ट्रीम का सेक्शन होता है वो आई थिंक इसलिए होता है कि हमें जब कोई अनाउंसमेंट करनी होती है क्लासरूम में तब हम उस आइकन का यूज करते हैं. ओके अवनीश सर, वेरी गुड. उन्होंने बताया स्ट्रीम इज लाइक फीड. ओके. और हार्ड कॉपी फॉर्म में आप समझ लीजिए कि जैसे नोटिस बोर्ड होता है, तो नोटिस बोर्ड आपके एंट्रेंस पे लगाया जाता है कॉलेज यूनिवर्सिटीज क्लासरूम में, so that whenever this is the first place that student must visit for what would be upcoming events and some important announcements and all that, जैसे कि नोटिस बोर्ड पर से सब चीजें पढ़ी और देखी जाती हैं, उस तरह की चीज आपके पास गूगल क्लासरूम में है. So this is the purpose of stream, and participants or students must visit this just to make sure. For example, for this particular faculty induction program also, let's say there is announcement of your sessional or exam or your presentation, and if there is any change in the date and all that, you may get it checked from a stream tab. So in classwork tab, there are options for creating assignment, quiz assignment, questions, study material, and many more things are available. Depending upon your teaching style or the requirement for that subject, what teachers can do, can create classwork. So this is one screen which shows that how classwork can be created. So there is this is wonderful facility of Google Classroom, wherein for, let's say I've clicked on assignment tab, right? So this is the screen for assignment. Here you may type the title of the assignment, or you may write the question of the assignment. If you don't want to give assignment in this form, in the form of question, in the form of title and all, what you can do, can prepare assignment on your own, and what if it is present in your Google Drive, can be shared from Google Drive, can be shared from your pen drive, from your hard disk, from any portable device or drive, and then a link or from URL can also be posted. The YouTube address may also be shared, and can add as many assignments, as many files as you want for giving assignment to your students. Let's say I have prepared these 2 questions, and for each question's date, last date for submission and the time for submission may be allocated to students. This may be allocated to different group of students differently. Like for somebody, the date of submission is this, while for other branch students, it may be something else. So all these settings can be done. Then you can also create multiple choice question, short answer questions from here, and can start your discussion in the class by floating some question, by floating some title, and can start discussion with the students, so that you can check that how much understanding on that particular topic your students are having. If there is any problem, you may discuss it in detail, can remove the queries, can solve the problem of students. And for that, here is one button you must say, that is students can see class summary. For the question, for that particular title, summary may be uploaded, and students can revisit that summary, can revisit your notes, and can let you know the answer, or can improve the understanding on that particular topic. So this is the useful feature of your
Google Classroom. Some more, as I said, MCQs can also be prepared and short answer. Here's the weightage of the question and the deadline. Let's say this is for computer students. This is common question for all students. And this one is only for electronics students. The another is common for all. So such kinds of setting can also be done. So that's why we say that this is a perfect platform for giving assignments, for preparing questions, and for grading marks, and for monitoring and tracking performance of students. Then we'll switch over to next type digital platform, which belongs to Cisco. The previous two were from Google, and this is from Cisco company, Cisco WebEx. The main features are listed here, 3 points. Like this is mainly used for conducting online meetings, team messaging, and file sharing with integrated voice and video. So this is the important feature, or you can say that useful option of WebEx, but doesn't mean at all that you can't conduct classes with this, because this is specialized for online meeting, but you can also teach in your classroom perfectly, because here there is option of integrated voice and video, while in Google Classroom you cannot share video files. So directly you cannot share, otherwise some options or some add-ons can be applied. Then somehow we can try, but here it is very easy to share integrated voice and video files. And then this is good in video conferencing. Or here also two options, that is either by using web browser or by using installed app. This is very secure, and number of devices anytime from anywhere can be connected. So this is the screen of Cisco WebEx. Either you may host the meeting or you may join the meeting. If you are hosting the meeting, you have to sign up from your email address, and you will reach directly to your personal room. So have a look. I have created my personal room in Cisco WebEx because I was using this platform for my online teaching during COVID-19. And this is the one. This is my personal room. So since I have signed up with my name, Salma Shaheen, therefore you can see SS here, this red color arrow, and this is personal room. Either you may become the host, then start a meeting if you are host. Otherwise, somebody else is conducting the meeting, then you may join the meeting and can schedule meetings for future as many as you want. And this is the link. Same link may be used throughout the year, throughout the semester, for teaching all subjects, for convening or conducting all the meetings. Therefore, no need to send again and again. The same link would be used every time whenever I am holding meetings or conducting classes. So as I said, that there are two options for getting access to Cisco WebEx, either by web browser or through installed app. Now, the question is, which option shall we use? So participants, you have seen that two options always, either web browser or installed app. Which one is better? Or when shall we use web browser and when shall we use installed app? Or what is the difference between these two? Can't you? Ma'am, installed app can be on Android platform like from Google Play Store or Mac Play Okay. Store, Okay. App Store, and web browser जो वेब प्लेटफॉर्म पे होता है वो गूगल जो क्रोम होता है जिसपे हम लैपटॉप पे यूज करते हैं, उसके लिए हम डायरेक्ट वेबसाइट पे जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं. So these are two ways for getting access किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए. If you are using web browser, then use any web browser and can reach to the parent page or the home page. उस प्लेटफॉर्म पे चले जाइए और फिर यूज कर सकते हैं. दूसरा, अविनेश सर ने बताया कि इंस्टॉल्ड ऐप आप प्ले स्टोर से अपने में इंस्टॉल कर लेंगे.
So the difference is, with the help of web browser, you can get limited tools, or must say limited facilities. And if you are using installed app, you will get some more, like for various tools for conducting video conferencing, for whiteboard, sharing of any type of document, maybe Word file, maybe PPT, maybe spreadsheet. And also, if you are holding or conducting classes occasionally, huh? Holding meetings or classes occasionally, once in a month, or once in a semester, or like that, then you must use a web browser. Otherwise, if you are holding all these things regularly, frequently, then it is suggested that installed app should be used. So these are two things. And now have a look. This is my personal room. Uh, I'm the host. My name or your name will appear here in Cisco WebEx. This is the one. Rest of the features like starting, sharing, and ending and recording will remain as it is. And then editing of profile with some colored pictures, some useful backgrounds, all that anytime can be done. Like here, some samples and some colors, structures are given. And then some more settings in Cisco WebEx, apart from this sharing, recording, mute, video, and all. There are some more, like you may log the meeting. Okay, so other person or the those who are late cannot join. Similarly, many other facilities are available for conducting the meeting, for holding the meeting, and for end of meeting. Now we'll see the next digital platform. The previous one was Cisco. उससे पहले जो आपने देखे वो Google के थे. Now this is belongs to Microsoft, MS Teams. What is the special feature of this? This is a collaboration app, right? तो हमने हर डिजिटल प्लेटफॉर्म का फर्स्ट पॉइंट जो है उसका मेन फीचर लिखा है, मीनिंग दिस प्लेटफॉर्म इज स्पेशलाइज्ड इन व्हाट, राइट? पढ़ा सबसे लेंगे, हर प्लेटफॉर्म से आप क्लास पढ़ा सकते हैं, मगर किसी किसी के जो स्पेशल फीचर्स हैं वी मस्ट नो कि उनको कैसे एक्सप्लॉइट करके यूज कर लें, और हमारा सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, और वॉट एवर स्टाइल ऑफ टीचिंग, लेट्स से some teachers they prefer heavy text, right? Some teachers they prefer more visualization, animations, audio, mathematical things, explanation, equation, right? So different teachers they are handling their subject differently. Am I right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Like some people Yes, say, no, ma'am. text, Yes, ma'am. text and simple diagrams are more than enough, right? Like some 50% text and 50% pictures, maybe schematic diagrams, maybe block diagram is more than enough to explain this topic. While another teacher may have different view, they may say, no, this may be supported by this also, this may be supported by some demonstration also, some live demonstration also may be given and all. So that's why I said, so depending upon your type of teaching, we may prefer or select a digital platform. As I said, the Microsoft Team is a collaboration app. What does it mean? It allows your team to stay organized and have conversation in one place. So there are two versions of Microsoft Team. One is free version. We'll discuss free version today. Even this free version is quite powerful in the sense, with the help of this, you are allowed to use unlimited chats, audio and video calls, and 10 GBs of file storage for your entire team. And then 2 GBs for individual person in a group for their personal storage. This much is available, which is more than enough to teach class, to store, to save your notes and all. So in Microsoft Team, for getting access to this,
You should have your Microsoft account. Like for Google, you should have Gmail account. Similarly, for using this platform, a Microsoft account is required. If you are using free version, some limited or basic features you will get. Otherwise, plain plan, which is paid, can get many more features for holding virtual meetings, screen sharing for any kind of document, and whiteboard as well. The last digital platform is Moodle, which stands for Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. The special feature of Moodle is this is LMS, which stands for Learning Management System. This indicates that this is complete learning management system. Therefore, it is used for enhancing any specific learning process. The purpose of this is to enhance a specific learning process, and where it is used in blended learning, blended education system, distance education system, or in flipped classroom. So here, with the help of Moodle, this is very good from administration point of view also. Let's say you can keep record of your students, whether they have registered for your course or not, what is the deadline for registration. You can keep track of students attendance record, their performance, each and everything. So this is good for from administrative point of view also, and otherwise also this system is good. And now so far we have seen 5 digital platforms. Now we'll compare these platforms. For comparison, the parameters are given on left side column in blue color column. This is the one, right? So here the Google Meet, Google Classroom, Cisco WebEx, Microsoft Team, and the last one is Moodle. So the limit of participants here, it is 100, 1,000, 100, 350. So you must understand that when you will get 1,000 in Google Classroom, when you will get 250. 250 is for personal account, and 1,000 is for G Suite account. Similarly, for rest of the cases, this is true. And the time limit per session is like this. This is 60 minutes, while in Google Classroom, it is once enrolled will remain on. Same is true with your Moodle also. And then talking about LMS, as I said, the learning management system, the complete system is available only in Moodle. So as far as the factor for judging LMS is concerned, Moodle has LMS. In Google Classroom, we can try this with the help of some additional app. So here it may be implemented by some add-ons. Otherwise, in rest of the platform, LMS is not available. Then audio video support, as I said, it is not available in Google Classroom, while and Moodle as well. Rest, yes. And then video conferencing facility is also not available in Google Classroom. Number of participants in one shot without scrolling, how many participants you can see in Google Meet, Google Classroom, it's given, and the name of the developer or the name of the company and the year in which it was launched is also given in last row. So this is the detailed comparison of all these 5 platforms that we have just discussed just now. Now, next is some open source or free of cost tools are available, which would be definitely effective for in online teaching, and otherwise also in hybrid mode also. These tools may be applied, whether it is related to audio editing, video editing, some recording of camera, microphone, each and everything in one shot. But here we'll discuss only some important and useful tools, like starting from Google Keep. Participants, do you use this Google Keep?
No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. Akansha ma'am, do you use Google No, Keep? ma'am. No, No. ma'am. Google No. Keep. I don't use. Manjula ma'am? No, ma'am. So quickly we'll see the how interesting it is. Really, it is good. Sometimes you may try, and it is not tough to use. As its name implies, this is used for note taking. This is note taking facility and listing service. Mainly used for two things. That is, whenever you want to jot down your notes, your class notes, your study material, and listing them. So it gives you complete list. Maybe for the same subject, you may have 2 or 3 different sets of notes. Some notes are old that you want to hide from the main screen. So this Google Keep will help you in listing all your notes, whether it is old or new. That's why this is wonderful feature for archiving your notes, right? So note taking and listing, and of course, can create, edit, organize your notes and archive your notes. And here the cloud saving is also available and compatible with the various platforms like Android also, iPhone also, iPad also. So this is the symbol which is appears as if it is bulb for Google Keep, and see what it does. Apart from this main feature, which is jotting down your notes and listing them and archiving them, there are few more things you can do, like setting up reminders and making the to-do list on the basis of priority. So whatever is going on in your mind, whether it is related to your office workplace or maybe related to household work, let's say you want to organize a party, what kind of gift, what time, the venue, each and everything, whatever is in your mind can be captured in Google Keep, and you can set the reminder, so that would be helpful for you to perform the task without delay. This is the moment you will go to Google Keep, this is the website. Otherwise, simply type Google Keep and can get access to this. For your notes, you may start typing your notes for any subject. Box is looking small, but this will increase as much. You can increase this as much as you want. It is unlimited space. And then it is not necessary that you must type each and everything in this box. You may do copy and paste from internet, from your pen drive, from your Google Drive, wherever is your file, copy and paste can easily be done. Then the background of the paper or the background of the notes, some simple colors, pastel colors can be applied in the background. Some pictures, as you can see in the next row, this can also be applied as the background of your notes. It is up to you. And then this icon is used for listing all your notes. All notes can be listed easily with the help of this. Here you may do sitting either date wise or the topic wise or the alphabetical order and all. So for sample, I have written only FFF here. And then this icon is for more features. Some features, some icons, like for this is collaborator, right? And this is for picture, this is archiving, this is undo, redo. And then by clicking here, you may delete your notes, can add label, can add drawing directly here, can make a copy, can make checkboxes, and many more things can be done with this tab. So like samples, I have created for my notes. I've taken this pink color background, green color background, and the small paragraph I have written just for demonstration purposes. This is a collaborator, the meaning of collaborator. So if you are listing your notes, all your notes, because this is the screenshot, that's why you can see only few. Otherwise, all notes would be listed here. This one, red color arrow, which is for collaborator. The moment you will click here, you are the owner of your notes.
right? Because you have prepared. So let's say I'm the owner of all my notes, but if you want to share it with your friends, with other teachers, other co-teachers, or with your students, in that case, click on collaborator. The mailing list will appear. You may check this. Let's say you want to send it to Misbah, want to send it to Salim and Sarah and Saad and all, then click this, meaning your notes would be shared with these people. So this is another advantage of your Google Keep. So participants, please use this sometimes and can enjoy this good facility. And then next is Google Jamboard. So participants, आपने ये यूज किया है Google Jamboard? मैम गूगल जैमबोर्ड गूगल मीटिंग में भी होता था, तो इस पे जो पेन पेपर की तरह नोट्स बनाते हैं उसके लिए होता है ये। जी मैम। Okay, so during this online teaching COVID-19 में, especially science subjects or maybe engineering subjects or maybe medical science subjects जब पढ़ाते हैं, तो कोई स्टूडेंट आपसे कोई सवाल पूछता है जिसको आपको बोर्ड पे, जैसे क्लासरूम में व्हाइट बोर्ड पे लिख के या चौक से लिख के आप बताते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, तो वो एक्सप्लेन करने के लिए क्या करते थे तब ऑनलाइन टीचिंग में? एक व्हाइट बोर्ड एप्लीकेशन होता था, वो यूज करते थे। व्हाइट बोर्ड एप्लीकेशन? जी मैम, जो जूम में तो वैसे ही प्रोवाइड होता था अलग से, और अगर एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो तो उसके लिए अलग से एंड्रॉइड ऐप पे आपको काफी स्केच बुक और काफी ऐसी चीजें मिल जाती थी। ओके। स्क्रीन राइटिंग का एक सॉफ्टवेयर होता था जिसपे स्क्रीन पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, उनको विजिबल होता था, चाहे वो पीडीएफ पे हो चाहे वो पीपीटी पे हो। ओके ओके। सो नुसरत परवीन मैम, व्हाट इज योर आइडिया? आपने कभी एक्सपीरियंस किया ऐसे कि सवाल पूछा एंड यू आर टू कीन टू एक्सप्लेन दैट, लेकिन अब ऑनलाइन में कैसे पढ़ाएं, कैसे बताएं, ऐसा कभी हुआ या नहीं? मैम ड्यूरिंग कोविड हमने बेसिकली आई एम अ कॉलेज लाइब्रेरियन, तो डायरेक्ट फेस टू फेस बच्चों के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, बट कोविड हमने एक प्लान किया था जिसमें बच्चों को किताबों से कैसे जोड़ा जाए, तो हमने भी गूगल क्लासरूम यूज किया था। गूगल जैमबोर्ड जो है वो यूज नहीं किया है मैंने। ओके ओके ओके। प्रविश्या पांडे मैम, व्हाट अबाउट यू? व्हाट सब्जेक्ट डू यू टीच? होम साइंस, बट मैंने यूज नहीं किया मैम। कोविड-19 दौरान मैं टीचिंग नहीं कर रही थी मैं। ओके ओके ओके। So initially when we were not aware with all these whiteboard or the digital board or the interactive board, so PPTs ही खोल लेते थे, उसमें एक ब्लैंक PPT खोल लेते थे, राइट? और जो कुछ भी फिंगर से या स्टाइलस से या उससे आप लिख पाते थे उस पे, उस तरह बच्चों को एक्सप्लेन करते थे, बिकॉज इन इंजीनियरिंग lots of mathematical things or the equation or the formula, this kind of understanding is required. So we were having tough time. So for that, we came to know later on that there is a facility of Google Jamboard that can be applied in online teaching. And this is basically digital whiteboard. Can see the useful or the attractive feature of this Jamboard. For making any announcements, this kind of stickers, which is known as sticky notes, can be applied. So for sample, only demo purpose के लिए, example के लिए आपको explain करने के लिए, I have written, what are you doing, where are you, like that. So such kind of things can be pasted on the whiteboard. This is like your reminder for giving important announcements to students. भूल नहीं जाएं, तो ये कर सकते हैं। अदरवाइज कोई क्या क्या नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द गाइडलाइंस और द नेक्स्ट बुलेटेड पॉइंट्स दैट यू हैव टू डिस्कस, ऑल दीज थिंग्स can be written in these sticky notes. So this is the symbol for your sticky notes. As you can see, left hand side of this slide, the various colors, rubbers, pen, pencil, geometrical figures, and the laser pointer as well is available. So here, like this, click on this, which is for sticky notes, can prepare sticky notes in any color, and then can save. तो वो आपका white board पे
टॉप पे आ जाए। दीज आर डिफरेंट कलर्स पेन जो आप लिखने के लिए, ड्रॉ करने के लिए कर सकते हैं। दिस इज फॉर ज्योमेट्रिकल फिगर्स, हेक्सागन, डायमंड, सर्कल, हाफ सर्कल एंड ऑल। Sometimes you may need graph, right? Grid आपको चाहिए for drawing some graph, some bars, some curves, curvatures draw करने के लिए आपको. In that case, backgrounds in different styles are available, different colors are available. I've taken a simple graph paper wherein some figures or graph can be drawn to explain it to your students. And then there is a tab of share, right? So this may be private, meaning for you only. Otherwise, if you want to share whatever you have written on the whiteboard, as it is, whatever you explain in whiteboard may be shared with people. तो इसको यहाँ से आप शेयर करा देंगे जो आपने वो बोर्ड पे जवाब लिखा था. Let's say I have drawn these 3 figures और हम इसको शेयर करना चाहते हैं तो शेयर टैब से कर दें. And then this is the laser pointer. The moment you will click this, तो आपके पास वो रेड कलर का बॉल, स्मॉल बॉल अपीयर हो जाएगा पॉइंटिंग के लिए. एज अ पॉइंटर दिस मे बी अप्लाई. अपार्ट फ्रॉम गूगल जैमबोर्ड, देयर इज वन मोर interactive whiteboard which is used for visualizing the ideas, is known as Miro board. Of course, this does not belong to Google and its name is Miro board. And the attractive feature of Miro board is some hundreds of professional looking samples for making graphs, for making gun chart, for making circle diagrams is given. Then please mute yourself. मैम कल भी इन्होंने यही किया था, आधे घंटे इनका यही चला था क्लास में. मजहर सर को मैंने कंप्लेंट किया. पूरी क्लास ऐसे ही गई थी. Participants, please make sure your mic is mute. Okay. So participants, please see that depending upon whether you have to do brainstorming for giving presentation, whether it is related to meetings and workshops, and maybe it is related to mapping and diagram, related to research and design, depending upon the subject, depending upon the type of presentation you have to do, may select from here. So all templates, the ready-made templates are available. As I said, this is mainly used for interaction, this kind of board, or it is used for brainstorming. For example, for market segmentation, let's say there are 4 experts. One is good or has collected the data on any project on demographic profile segmentation. Other has collected data on psychological segmentation. Another may be behavioral, and one more may be geographical or anything. So as you can see that there are 4 squares in this board, in this template. Can upload file from here, this point, maybe from your hard disk, pen drive, कहीं भी आपके पास आपका डेटा है वो आप यहाँ बोर्ड पे, इस इंटरैक्टिव बोर्ड पे शेयर कर सकते हैं. Then you can invite collaborators, meaning the person who is expert in giving ideas about demographic segmentation may be invited. Other person from UK or USA may be invited for geographical segmentation. Other may be from psychological, like that. So this is one example I've given related to marketing. Otherwise, for each and every subject, which would be very useful for medical sciences, for engineering, let's say somebody is expert in computer science, another is in electronics and all, and you are doing some project, because these days interdisciplinary concept is gaining ground in the market. तो आप एक्सपर्ट को इनवाइट करके वो अपना डेटा प्रेजेंट करके इंटरैक्ट कर सकते हैं. दिस इज द एडवांटेज ऑफ योर Miro board. Now the next tool, I must say, which is combination of hardware and software, known as digitizer or graphic tablets, right? Digitizer
और ग्राफिक टैबलेट्स यूज किया है आप लोगों ने? अत्री मैम, No, ma'am. Atri ma'am, have you used this digitizer? No, ma'am, I haven't used it yet. Sarika ma'am, please. No, ma'am. No use kiya. So see, what happens, let's say you have to draw something on your laptop screen or maybe desktop class mein jab padha rahe, then what happens, if you are using mouse or finger, only limited things can be drawn or written, right? This is a device which is combination of hardware and software and it is USB based. और जैसे आपका एक पैड होता है छोटा सा, उस तरह से आप इसको अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में कनेक्ट कर लीजिए, and then it works exactly in the same way as if you are writing on a paper using your pen, including your signatures, your diagrams or text or equation, each and everything can be done easily. So here, by using digitizer, there would be no interactive device. Intermediate device is not needed. Directly, your finger, your pen, your pointer will interact with the computer and would be displayed on the screen. So this is also a wonderful feature whenever either students are asking question or you want to explain anything या आपको कुछ example देके बताना है, कुछ additional चीजें आप जो आपकी PPTs में नहीं थी, whenever you want to explain all these things, for that digitizer or graphic tablet is required. So can have a look. Different sizes shapes, sizes are available. There are two different types of digitizer. This is your pen, which is known as electronic pen or stylus. You start writing here on the screen with your hand and would be displayed on computer, can be saved, can be edited, can be processed, and can be forwarded, shared to with anybody. So this is the use of digitizer or graphic tablet. Then one more tool. Once again, this is combination of hardware and software, which is known as speech recognition system. I'm sure that participants might have not used this for teaching classes, but otherwise in your day-to-day life, कुछ भी काम के लिए आप इसको स्पीच रिकग्निशन को यूज करते हैं और कर चुके हैं. Can somebody tell me what is this speech recognition system? मैम, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम एक सिस्टम है जैसे कि हम लोग वॉइस टाइपिंग करते हैं, मतलब जो भी हम लोग बोलते हैं उसको वो क्या करता है कि रिटन फॉर्म में हमें प्रेजेंट करता है. Okay. So if I say that this is attractive feature for classroom teaching, because what happens, maybe you are a very good teacher, your academic record, very good sound, everything perfect. But sometimes what happens, our pronunciation is not clear, right? Sometimes our pronunciation is not clear, or sometimes pace is too high, right? जल्दी जल्दी क्लास में बोलते हैं, वो part of habit होता है, improve करने की कोशिश करते हैं, but even then बहुत ज़्यादा improve नहीं कर पाते. तो कहना चाहिए बहुत जल्दी जल्दी, number of words per minute is too high, right? So students are facing difficulty. Sometimes the volume is either too low or too high. If it is too high, even then it is piercing or boring or irritating for students. If it is too low, those who are sitting in the back cannot hear, right? So in order to make your teaching more effective, what we can do, can use a speech recognition system, and then whatever teacher or instructor is saying in class would be displayed on the screen. So those who cannot hear, those who cannot understand your pronunciation can see on the board what it is written. Apart from that, let's say in this winter season or sometimes else also, what happens, whenever students are coming to your class and teacher is dictating or telling something, some key points, and students are trying to note it down, but there is a difference in pace or a speed. So what students are doing, they are using acronyms or they are using short words so that they can cope up with the speed of the teacher. And later on, after a week or so, when they are viewing their notes, they themselves cannot recognize what it was written. कुछ ना कुछ छूट जाता है बीच में, कहीं वर्ड छूट गए, कहीं जो लिखा था वो आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, and all that.
So for all these things, this speech recognition system can be used. Also, physically challenged people or anybody whoever having pain in their finger or hand or palm, because of which cannot do typing, for such kind of teachers or people, this is very good facility. There's no need to do typing. Or sometimes we feel lazy, boring, lagta hai itna kaun type karega. So what can do? Can speak. So see few important features of this speech recognition system. As I said, this is quite effective in e-teaching and learning, and good for physically challenged people also. And not only for teaching and learning, this is also good for evaluation purposes, right? तो किन किन टीचर्स को कॉपी चेक करना, इवैल्यूएट करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिल से, बहुत पैशन से कॉपी चेक करते हैं? Yes, ma'am. Dr. Meenu, ma'am. Dr. Yes. Meenu, huh? Yes. Every time you are too keen to for evaluation or marking, right? Yes, ma'am. Okay. What about other teachers? Because I have heard that sometimes teachers say this takes long time, we'll do it tomorrow, or feel lazy, or sometimes not finding it interesting. Sometimes, right? So is it true or not? Ma'am, I procrastinate a lot. Sorry? It's true, ma'am. It is true. It is true. हाँ, तो सच्ची बात कह रहे हैं, है ना? तो कभी कभी ऐसा लगता है, और कभी पेंडिंग रह जाती कॉपीज, टाइम पे देनी चाहिए बच्चों को, सो दैट दे कैन सी देयर फीडबैक एंड कैन वर्क हार्ड फॉर द एग्जाम परफॉर्मेंस, उनको पता चलेगी. तो लेट कॉपी चेक करते हैं हम लोग. So for that also, this speech recognition system is good, because instead of marking using pen and paper, you can use this can use speaker, or speak the name and the roll number of student. तो जितनी जल्दी बोल लेंगे, लिखने में it takes time, है ना? Or whatever is performance, let's say you have given 8 marks out of 10, and some remarks like your assignment was not appropriate, question number 3 is missing, question number 4 lack of diagram, question number 5 is no smooth flow of information, or whatever comments teachers are writing. Each and everything you may speak in the speaker, one Excel sheet would be prepared. So data has been conducted, and it has been observed that around 40% time teachers can save by using speech recognition system for evaluation work. In addition to that, this is a good facility or good feature for writing letter of recommendation to your students. आपने देखा कि सब बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, या इंडिया में भी मास्टर्स के लिए, बैचलर्स प्रोग्राम के लिए, whenever they are leaving, तो वो अपने टीचर से एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन उनके एडमिशन के लिए मांगते हैं. देन व्हाट हैपेंस, 3-4 साल बाद अगर स्टूडेंट्स आता है तो हम भूल चुके होते हैं एग्जैक्टली इसकी परफॉर्मेंस क्या थी. तो एक जेन्युइन LOR नहीं देते, बस ऐसे ही लिख देते हैं, हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड परफॉर्मेंस. फॉर एग्जैक्ट, genuine, accurate letter of recommendation may be given, because with the help of this Excel sheet जो आपने डेटा बनाया था, आपके सब्जेक्ट में, असाइनमेंट में कितने मार्क्स थे, अटेंडेंस कितनी थी, परफॉर्मेंस कितनी थी, each and everything can be seen, and then you may give proper or genuine, authentic letter of recommendation. So have a quick look. हमने आपको बताया, आपने भी बताया कि आप बोलते हैं और वो बोर्ड पे लिख जाता है, बस ऐसे ही है. So here speech recognition system, जो प्रॉपर स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम है, जिनको आप परचेज करते हैं, दैट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, मोर देन 1 लाख. लेकिन मोर और लेस काम उसी तरह करते हैं जैसे आप गूगल असिस्टेंट यूज करते हैं, एप्पल डिक्टेशन यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डॉक यूज करते हैं. सिमिलरली देयर आर मेनी मोर वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने नेट की सर्चिंग के लिए भी यूज करते हैं. क्योंकि हमने वर्ड सुना है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द स्पेलिंग, और आई एम हेजिटेटिंग करेक्ट स्पेलिंग क्या है उसकी, तो फिर हम क्या करते हैं, बोल देते हैं, तो वो अपने आप से आपको सर्च करके दे देता है ना. सेम इज द पर्पस हियर आल्सो. लेकिन अगर प्रॉपर आप इसको परचेज, लाइसेंस और ये सब खरीदेंगे, देन इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव. तो पता होना चाहिए क्या है. Problem associated with the speech recognition system, I'm talking about a specific speech recognition system which is known as Dragon, which is quite expensive. This is person dependent, right?
This is person dependent, and different people speak differently. So what happens sometimes, if there is noise in the environment or किसी भी type का disturbance है, in that cases, let's say you are saying senior years, it will show senior years. And then doing cell addressing, for example, doing Excel addressing. So what you have to do, first time वो आपका pronunciation recognize नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम थोड़ा फर्क तरह से बोलते हैं. Then such kind of things will happen, and then you may correct it, you may remove this error, and next time will work perfectly all right. फिर कभी क्योंकि उसे पता चल गया कि हम इसको ऐसे pronounce करते हैं, right? So such tools may be applied. This is the picture of samples of speech recognition system. Apart from that, I said free of cost wale free version, which is e-speaking, Apple dictation, Google Doc, ये सब use करते हैं. So have a quick look, free उस पे कैसे यूज कर सकते हैं. तो कोई यूज करता है सर्चिंग के अलावा? आप कहीं अपना जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हैं और आपको टाइप करने का मूड नहीं है, हैव यू एवर अप्लाइड दिस? यस मैम, Google माइक्रोसॉफ्ट Docs एक्सेल में अप्लाई किया था मैंने. एक्सेल में अप्लाई किया था, राइट? तो देखिए ये आपके पास जो एमएस ऑफिस होता है उसी का एड ऑन है, उसी का एक पार्ट है एमएस ऑफिस का ही, विच इज नोन एज माइक्रोसॉफ्ट डिक्टेट, एंड इट वर्क्स वेल इन वर्ड, PowerPoint and Outlook. So as I said, this is a real game changer in the classroom, and wonderful facility for teachers and for those who don't feel like typing, maybe because of some problem or otherwise also. So see how it works. From here, can click on dictation and then start this mic. Cursor will appear here, और अब आप इसमें अपने नोट्स बोल दीजिए, सेंटेंसेस बोल दीजिए, पैराग्राफ बोल दीजिए, क्वेश्चन बोल दीजिए, जो भी बोलेंगे वो ऑटोमेटिकली इंग्लिश में टाइप कर दे. Then for putting manual punctuations, there are two ways. Either it may be automatic or it may be manual punctuation. Manual punctuation है next line, next paragraph, comma, colon, वो आपको कीबोर्ड से कर सकते हैं, अदरवाइज आप बोल देंगे ऑटोमेटिकली तो वो कॉमा फुल स्टॉप ले ले. सिमिलरली अनदर फैसिलिटी ऑफ गूगल इज यही चीज है लेकिन गूगल डॉक वाइज कहलाता है. फॉर दैट यू हैव टू साइन इन फ्रॉम योर गूगल अकाउंट, एंड हियर whenever there are some errors, जब आप टाइप करते हैं तो कुछ errors होती हैं, later on you have realized कि फॉर्मेटिंग क्लियर कर लेते हैं, अच्छी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इसको मोर प्रोफेशनल लुकिंग बना लेते हैं. फॉर दैट इन दिस सॉफ्टवेयर hundreds of commands are available for editing and formatting your document. आप बस बोल के बता दीजिए, लाइन कर दे, जस्टिफाई कर दे, बोल्ड कर दे, फर्स्ट पैराग्राफ इन रेड कलर, फर्स्ट पैराग्राफ in Times New Roman and all can be done. So have a quick look how you can apply this. Go in Tools tab, right? Go in Tools tab and click on voice typing. This cursor will appear and then allow, और फिर आप बोलने लगे. तो देखिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा सेंटेंस बोला, दिस इज जस्ट अ टेस्ट, राइट? और बस इतना ही बोला आपको दिखाने के लिए, और इसका स्क्रीनशॉट आई हैव टेकन. सो लाइक दिस दिस वर्क्स, which is known as Google Docs voice. One more sample I have prepared. Hi, where are you? What are you doing? And all. तो ये हो जाता है. फिर आप दोबारा से स्पीकर पे, माइक्रोफोन पे क्लिक करेंगे तो वो ऑफ हो जाता है. ओके. And then I think I must discuss some AI tools also. So now we'll switch over to artificial intelligence. This word, this topic, or this branch of engineering is in these days. So what is your opinion? ये अच्छी चीज है कि नहीं अच्छी चीज है, या अभी ज्यादा आइडिया नहीं है इस बारे में? Teachers का what is teachers feedback applying AI tools like ChatGPT? I think either you might have used या आप familiar होंगे उससे और सब चीज प्रिपेयर करते होंगे ChatGPT से. स्टूडेंट्स भी उसी से प्रिपेयर कर रहे हैं और टीचर भी उसी से प्रिपेयर कर रहे हैं. What do you think? Is it good? या मैम ये जो एआई के टूल्स होते हैं वो टीचिंग या किसी रिसर्च वर्क के लिए काफ़ी
अच्छा टूल माना जा रहा है और ये लोगों की काफी मदद भी कर रहा है। इवन इसका यूज तो हम लोग जो थेसिस या पेपर सबमिट करते हैं मैम, उसका फ्लैग चेक के लिए भी किया जाता है। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट टूल है एआई का। बेस्ट टूल है। तो सर ने बताया है कि ये बेस्ट टूल है, तो फिर हम बेस्ट डायरेक्शन में ही चल के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या एआई टूल्स अपनी रिसर्च में, थीसिस जमा करने में, टेक्निकल रिसर्च पेपर लिखने में, प्रेजेंटेशन करने में, हाँ, फॉर योर डे टू डे वर्क, एकेडमिक नॉन एकेडमिक, कहीं पे जाना है, अपनी स्पीच प्रिपेयर करना है, मुझे कुछ बोलना है इस टॉपिक पे, मुझे पब्लिक को एड्रेस करना है, फॉर ईच एंड एवरीथिंग एआई टूल्स कैन बी अप्लाइड। तो चैट जीपीटी कितने लोग यूज करते हैं? पार्टिसिपेंट्स, हाउ मेनी? मैम पर्सनली चैट जीपीटी से ज्यादा यूजफुल मुझे परप्लेक्सिटी एआई लगता है। हाँ। लेकिन हाँ, अगर कोई किसी के पास चैट जीपीटी का अगर पेड सब्सक्रिप्शन है GPT-4 वाला, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। और एक और टूल है मैम, गामा। गामा बहुत बढ़िया, मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या वेबसाइट बनाने के लिए। और एक है पॉप एआई। पॉप एआई भी बहुत बढ़िया है। तो अराउंड 50 सच एआई टूल्स आर अवेलेबल, है ना? जैसे रोहित सर ने बताया कि अब वंस अगेन, जैसे आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म देखे कि क्या वीडियो करना है, कि ऑडियो करना है, कि सिंक्रोनाइज करना है, कि मीटिंग करना है, उस हिसाब से सेलेक्ट कीजिए। सिमिलरली हियर ऑल्सो at the moment more than 50 very good AI tools are available। अब आपको देखना है कि आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, कि लेक्चर देना है, कि स्टडी मटेरियल बनाना है, कि प्रोजेक्ट गाइडलाइंस प्रिपेयर करना है, राइट, और असाइनमेंट या किस तरह का काम करना है। हर एआई टूल अपने आप का एक इम्पॉर्टेंट फीचर रखता है, तो आपको उसको पता होना चाहिए कि क्या है। So before I go into details of all these tools, I think it is important to get you familiarized with artificial intelligence. As its name implies, जैसे लोग कहते हैं भाई पता तो चले ये AI है क्या चीज, तो देखिए, as its name implies, this is a type of intelligence, artificial intelligence, right? So this is the type of intelligence that can be applied, right, artificially in computer-based system. Intelligence that is applied in computer-based system artificially is known as artificial intelligence. Basically, what it does, creating machines or systems by using AI technology that can mimic human being। बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, अपनी किसी को प्रॉब्लम बता रहे हो, तो इस तरह की मशीन्स और सिस्टम्स क्रिएट कर दिए हैं दैट कैन मिमिक ह्यूमन बीइंग, whether it is in the field of learning, problem solving, decision making, reasoning है, perception है, language है, जहां कहीं कोई काम करने के लिए इंसान के अकल की जरूरत होती है, कोई डिसीजन बनाना है ना, इस तरह का करना है, ये इनपुट है, अब क्या करें, है ना, तो अब क्या करें, वो एआई यूज करके मशीन और सिस्टम ही आपका काम कर दे रहे हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग डिसीजन लेगा, उसी तरह का डिसीजन ये भी कर सकते हैं। So today we'll see the importance of artificial intelligence in our education system. So as a few participants have told, this is very good for preparing presentation. Some are good for drawing pictures. Some are good for making speeches and all. So here, because it has its involvement in each and every field, therefore, our education system has been changed completely because of these AI tools. And today, the use of or importance of AI tools in teaching and learning is great in the sense different students learn differently, meaning today we need personalized teaching. Personalized learning and teaching is important because different students learn differently. They are having unique style to learn. They need different pace. And of course, our conventional or traditional classrooms are not able to cater the need of individual student. Therefore, it is important to use AI tools which are more effective, more engaging, and more understandable. And it's good for teachers also, for students also, like for teachers in designing, preparing, making study material, lesson plans, project outlines, students report, creating MCQ type, poll type questions, and short answer or detailed answer question can easily be prepared by using AI tools.
And another thing is time constraints, because few years back, some universities were having annual system once in a year. एक subject को साल भर पढ़ाना है और साल में exam हुआ करते थे. But these days, everywhere we have semester system and at least 2 semesters in a year. Am I right? All of you are having 2 semesters in a year? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. In Yes, ma'am. some private universities in India and abroad, there are 3 semesters per week, like in Singapore, in Malaysia, in UK also, in Spain also, there are 3 semesters per year. Now you can imagine yourself that time constraint, how tough it is for teachers to complete the course. Even in 2 semesters in a year also, teachers are finding difficult to complete the course. So these AI tools can be applied because they help in saving time. So some commonly used AI tools, अभी participants ने बहुत सारे बता दिए, हमने बहुत थोड़े से यहाँ पे लिखे हैं. For example, ChatGPT, or the name of the company or the developer of the company is given in the bracket. ChatGPT belongs to OpenAI, and then Bard is from Google, Bing AI is Microsoft, similarly many more. So all these AI tools that I have listed or mentioned here, they are all LLM. What is the meaning of LLM? It stands for large language model. Very good, sir. So Large language large model. language model का क्या मतलब है कि which can understand and generate human language at a very advanced level. ठीक है, तो ये सभी से बिल्कुल जैसे आपको कोई काम दे दिया जाए आप करेंगे, तो ये एआई टूल्स आपका ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल और उसी तरह की लैंग्वेज जनरेट करेंगे जनरली जैसे ह्यूमन बीइंग लिखते हैं. सो लास्ट लाइन एज स्टेटेड दैट इट इज समथिंग लाइक दैट यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन, बिल्कुल जैसे आप बात करते हैं. और क्या आता है आपको ये? सो विल सी हाउ दिस चैट जीपीटी वर्क्स. जैसे अभी किसी पार्टिसिपेंट ने बताया था कि चैट जीपीटी का अगर 4th वर्जन या 4th एडिशन लेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, तो उसमें एडवांस टूल है. कोई भी चीज फ्री लेते हैं, ऑफ कोर्स यू विल गेट ओनली बेसिक टूल्स, बेसिक फीचर्स आपको मिलेंगे, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या एआई टूल्स हो. सो हियर द 3.5 वर्जन इज फ्री. If you are new user, you may sign up and after that can log in. तो sign up यहाँ से कर दीजिए और log in ये window है, इस पे कर दीजिए. And then it will ask for username and password like all other application. Nothing is new. तो आपने यहाँ पे अपना password और keyword लिख दिया है. फिर किसी भी subject से related सवाल इससे आप पूछ लीजिए, whether it is related to science, maths, arts, music, social sciences, anything, or you may ask this to do or write a poem on this topic या कुछ काम कहेंगे. तो देखिए हमने कुछ वर्क करके रखा है. जैसे आपको बताया कि इट इज समथिंग लाइक दैट, जैसे आप किसी और से बात कर रहे हो. हमने एक सवाल है, आपने अपनी फ्रेंड से पूछा कि मेरे बच्चों की ड्राइंग शीट्स बहुत सारी घर पे पड़ी हैं, तो बहुत सारा कूड़ा भी जमा है, लेकिन मैं उसको फेंकना भी नहीं चाहती हूँ, व्हाट शैल आई डू? या आप लोग क्या करते हो उन ड्राइंग फाइल का? इसी तरह कोई भी सवाल जैसे ह्यूमन बीइंग से बात करते हैं तो वो आपको बेस्ट आंसर प्रिपेयर करके दे देंगे. से फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन वॉज, येलो कलर से हाईलाइट किया है मैंने. द क्वेश्चन इज व्हाट आर 5 क्रिएटिव थिंग्स दैट कैन बी डन विद द ड्राइंग. तो देखिए दिस इज द रिप्लाई ऑफ चैट जीपीटी, और लंबा रिप्लाई है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, दैट्स व्हाई यू कैन सी. 2 आपने उससे कहा था 5 बताओ, मुझे 5 सोल्यूशन बताओ, बट ही हैव लिस्टेड ओनली 2 हैं और 5 भी हैं. तो आपने पढ़ा बट यू आर नॉट हैप्पी, राइट? Then second question मैंने चैट जीपीटी से something I have to speak because I have to take part in panel discussion on women empowerment. तो इन्होंने हमारा पैनल डिस्कशन के लिए ये बना दिया. Then whatever are the results, let's say you are not happy. You are not happy with the result. You are not happy with the speech. You are not happy with the words that ChatGPT has used. So you may ask this to regenerate. There is a button. आप कहें उसको फिर से लिखो तो वो regenerate करेगा.
Then you have to submit the feedback whether the regenerated speech or answer was same as previous, or it was worse, or it was better, like that. तो जो आप reply देंगे, then again you may ask us to regenerate if you are not happy. So like that, this chat GPT works. जैसे हमने बताया 4 वर्जन भी है which is paid. तो at the moment we are using 3.5. किसी भी टॉपिक पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, लेट्स से यू आर ट्राइंग टू प्लान अ ट्रिप टू यूएस और यूके, तो वो पूरी आपके पास प्लान बना के सब दे देंगे. तो जैसे आपको बताया, कुछ भी काम करना है, कराना है, तो वो आप ये एआई पावर्ड चैट जीपीटी को दे दीजिए और वो आपका काम अपने आप से कर दे. देखिए, देयर आर फ्यू मोर टैब्स. टेल मी अ फन फैक्ट, डिजाइन अ डेटाबेस, है ना, इस तरह से. और देखिए यहाँ पे लेट्स से आई पुट स्पीच फॉर एज गेस्ट ऑफ ऑनर, आई एम सपोज टू से समथिंग ऑन विमेंस डे, हाउ शैल आई प्रिपेयर, एंड देन क्लिक गो, तो वो आपको स्पीच बता दें. एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 कंसेप्ट्स आपसे पूछे फॉर आर्केड गेम, तो वो उन्होंने आपको बता दिए. सो लाइक योर चैट जीपीटी इज टेकिंग textual input and preparing output based on your question, your restrictions, your terms and conditions जैसे आपने बताई थी. Based on that, it will produce output. Madam, it can be used as an extension in Chrome as well, na? Extension in Chrome? Yes, ma'am. मैम, जो को पायलट है ना, जो जेमिनी है ना, आई थिंक वो क्रोम पे नहीं लेकिन उसमें आता है, जो माइक्रोसॉफ्ट का जो वेब ब्राउजर है, उसका नाम मैं भूल गया, बिंग. बिंग पे शायद को पायलट आता है. अच्छा. अब क्रोम पे हो सकता है आगे चल के बार्ड आ जाए. अगर ये गूगल वालों, हो सकता है ऑलरेडी दे दिया हो, मैंने तो चेक भी नहीं किया. अच्छा, अभी लेटेस्ट चेक कीजिएगा. ठीक है, इनकी ब्यूटी यही है कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबल होने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि गूगल के ब्राउजर से ओपन होगा और दूसरे से नहीं होगा. समटाइम्स दिस हैपेंस, फिर उसको वो करते हैं, तो वही पॉपुलैरिटी उसी की होगी जो जिसके साथ सबके साथ कंपैटिबल है. राइट. सो हियर द अनदर एआई पावर टूल which is known as DAL-E. तो DAL-E में भी E2 इज फ्री वर्जन, तो हम फ्री वर्जन पे काम करेंगे. तो अभी कुछ पार्टिसिपेंट ने बताया कि वो बहुत अच्छे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बना देता है, किसी ने बताया वो बहुत अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर देता है. तो आपको कभी डायग्राम्स भी तो बनाने पड़ते हैं, कभी पिक्चर्स भी तो बनानी पड़ती हैं, है ना. तो पिक्चर कुछ आप इमेजिन कर रहे हैं और उस तरह की पिक्चर, एक यूजफुल, वेरी अट्रैक्टिव, प्रोफेशनल लुकिंग पिक्चर ढूंढ रहे हैं किसी भी चीज पे, जो आप चाहते हैं स्टूडेंट्स को दिखा दें, तो देयर लर्निंग वुड बी इम्प्रूव and their retention on that particular topic or theme would be approved. मुझे कहीं से ऐसी पिक्चर मिल जाए, तो आप क्या करोगे? नेट पे ढूंढते हैं, है ना. बुक्स में नहीं मिली, फिर नेट पे ढूंढते हैं या नेट पे ही डायरेक्ट ढूंढते हैं. This DAL-E2 is specialized in making pictures based on the input. आप उससे बस कह दीजिए, let's say you are trying to prepare an image of red, beautiful, fresh rose in a transparent vase. Let's say ये है, आपने कहा, है ना. तो बस आप उससे कह दीजिए, चाहे बोल दीजिए चाहे लिख दीजिए, then it will prepare a same type of picture. As I said, images draw करने के लिए DAL-E is the perfect AI tool. And आपने simple natural language में आप उसको बता दीजिए और वो आपका प्रिपेयर. सो फॉर एग्जाम्पल, हमने कुछ चीजें प्रिपेयर करी हैं, लाइक दिस येलो हाइलाइटर. एक ऐसा लगे, जो पिक्चर आए वो ऐसे लगे कि ऑयल पेंटिंग की हुई है. हाँ, कैनवस पे पेंटिंग है, ऑयल पेंटिंग है, और में इट शुड गिव अपीयरेंस एज इफ इट इज फैब्रिक पेंटिंग. वो सब आप सेट कर सकते हैं. तो आपने कहा इट शुड बी लाइक ऑयल पेंटिंग ऑफ सनफ्लावर्स इन अ पर्पल वाज. तो वाज जो है वो पर्पल कलर का होना चाहिए. एंड देन क्लिक जनरेट, है ना. इतना आपने लिखा, इतना बताया, एंड देन जनरेट, तो वो आपको फ्लावर, येलो फ्लावर बना. तो देखिए यहाँ पे इनपुट गिवन बाय ह्यूमन इज एस्ट्रोनॉट राइडिंग अ हॉर्स इन फोटो रियलिस्टिक स्टाइल. वेरी रियलिस्टिक, बिल्कुल जैसे 3D इमेजेस भी आप बना सकते हैं.
और रियल लुक देने वाली कोई भी पिक्चर बेस्ड ऑन योर इनपुट डेल E2 से विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। तो देखिए एस्ट्रोनॉट की एक पिक्चर ये बनाई, बट यू आर नॉट हैप्पी, तो इन्होंने दूसरी पिक्चर और बना दी और यहाँ पे एरो करिए तो 5, 6, 7, 8 पिक्चर्स आपको इसमें से जो बेस्ट पिक्चर लगे वो सेलेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज आप ज्यादा एडवांस इनपुट दे सकते हैं और अकॉर्डिंगली वो आपका प्रिपेयर कर देंगे। तो जैसे हमने बताया और पार्टिसिपेंट्स भी कुछ AI टूल्स यूज करते दिख रहे हैं आपको, तो कंपनी हमने आपको बता दी कि ये इसके डिजाइनर डेवलपर कौन थे, मगर सबके साथ कंपैटिबल होना चाहिए। ये बात सही है कि ये किसी को कोई सा टूल AI टूल किसी चीज में स्पेशलाइज है और किसी का किसी चीज में स्पेशलाइज है। सो आई थिंक this much is related to your AI tools. In addition to that, I would also like to discuss कुछ अगर आपको ऑनलाइन क्विज या MCQ प्रिपेयर करने हैं, मे बी ऑफलाइन भी उनको आप यूटिलाइज कर लें, एंड यू आर हैविंग शॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, तो देयर इज अ यूजफुल साइट which is known as quizzes.com, right? This is for making such kind of things like MCQs बना सकते हैं, fill in the blanks वाले, polls वाले, and open-ended question, and for each and every question time limit can set, और उनको play quiz live भी play कर सकते हैं, otherwise अगर offline conduct कर रहे हैं तो वहाँ के लिए। Do you use this site for questions? अपने सब्जेक्ट जो पढ़ाते हैं उसमें ये साइट यूज करते हैं, कभी देखी है इसको? यस मैम, यूज किया है मैंने। यूज किया है, तो इज इट इंटरेस्टिंग, यूजफुल है या नहीं, अच्छा नहीं है कुछ? मैम अच्छा है मैम, इसमें लाइव भी आप परफॉर्मेंस देख सकते हो, लाइव रैंकिंग भी हम दिखा सकते हैं इसके अंदर, डैशबोर्ड रहता है उसमें। तो लाइव भी है, डैशबोर्ड भी है, उनके क्वेश्चंस ले लीजिए, आइडिया ले लीजिए, उनको एडिट कर लीजिए आप, है ना, और उसी में चेंज कर लीजिए, उनके MCQs के आंसर चेंज कर लीजिए, एवरीथिंग कैन बी डन। तो ये नहीं कहा जा रहा है कि सारी चीज रेडीमेड की तरफ चले जाएं, देन व्हाट टीचर्स विल डू। चैट GPT ने काम कर दिया, थोड़ा सा डेली ने काम कर दिया, थोड़ा सा क्विज डॉट में, तो एक रेफरेंस की तरह से उनको हमको यूज करना चाहिए। लाइक टूल्स हमारा काम आसान करती है, काम तो हमें ही करना पड़ता है, कमांड हमको ही देनी पड़ेगी, बट हमारा समय बचाती है, और आपका एक सपोर्ट है। व्हेनेवर बहुत टाइम आपको रीथिंक कैसे लिखें, क्या करें, तो एक रेफरेंस के लिए बेसिक आइडिया एंड ऑफ कोर्स कैन सेव टाइम, बट एवरी टाइम 100% इन सब पे ही रिलाई कर जाए, दिस शुड नॉट हैपन। फॉर एग्जांपल वन इंटरेस्टिंग इंसिडेंस, एक फंक्शन था, उसमें 5 लोग स्टेज शेयर कर रहे थे और सबको कुछ वर्ड्स कहने थे इंजीनियर्स डे पे लेट्स से। तो चीफ गेस्ट भी थे, 2 गेस्ट ऑफ ऑनर और एक स्पेशल गेस्ट एंड व्हाट नॉट। तो सब लोगों ने अपनी स्पीच गूगल से ही प्रिपेयर करी थी, राइट? तो गूगल में जो टॉप 5 टॉप 6 साइट्स आती हैं, उतना टाइम भी नहीं है कि और खोल के देख लें और उसमें से कुछ कॉपी पेस्ट करके लिख के उसको स्मूथ फ्लो बना लें, नो सच थिंग। जो टॉप पे आई ऑप्टिमाइज होके उसी में से ले लिया। तो 2-3 गेस्ट ने खुद ही कहा कि जो मुझे बोलना था वो ऑलरेडी बोल चुके हैं, क्योंकि मैं भी यही प्रिपेयर करके लाया, राइट? सो दिस शुड नॉट हैपन। हमें थोड़ा सा अपना भी ले लीजिए उसमें से, साइट से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको अपनी तरह से फिर आप रीसेट करके कुछ अपना ऐड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। सो सेम इज ट्रू विद ईच एंड एवरी टूल। और quizzes.com, as you can see, for each and every subject, ready-made questions are available here, whether it is related to maths, social studies, science, music, सबके हैं। So here you have to log in first and then create, right? तो create में let's say on computer networking, on technology, किस subject पे बनाने हैं वो आप select कर लीजिए, and the type of question you may select from here, check box, fill in the blanks, poll, ऐसे कर लीजिए। And then next, let's say 20 questions or 30 questions you have to prepare. तो ये ready-made question टॉपिक पे दिए हुए हैं, जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया था, और ये इसके ऑप्शंस हैं। यहाँ ऑप्शंस आप राइट वाला जो है उसको रहने देते हैं, बाकी जो रॉन्ग आंसर्स हैं वो कोई भी ऐड कर सकते हैं।
Similarly, मैम yes. अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग बनानी है तो तब फिर कैसे बनाएंगे? तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लेट्स से क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? मैं पर्शियन पढ़ाता हूँ मैम। पर्शियन पढ़ाते हैं, है ना? जी। तो पर्शियन में भी कुछ स्पेशलाइजेशन होगा? ऐसे तो मॉडर्न है हमारा। हाँ हाँ, मॉडर्न पर्शियन। जी। तो आप मॉडर्न पर्शियन में मॉडर्न पर्शियन डाल के जब पर्शियन वाला डेटाबेस खुलेगा, क्वेश्चंस का इन जनरल पर्शियन वाला डेटाबेस, उसमें आपको सब ऑप्शंस जो सिलेबस के हिसाब से टाइटल हैं, जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैंने कंप्यूटर के उसमें बनाया है, कंप्यूटर में कीबोर्ड भी है, माउस भी है, स्क्रीन भी है, राइट? तो आप कंप्यूटर से रिलेटेड या स्क्रीन से रिलेटेड या माउस से रिलेटेड सवाल का सर्च करने का ऑप्शन भी उसमें है, राइट? तो उसके डेटाबेस में जितने क्वेश्चन से रिलेटेड वो आपको एक quiz.com पे मिल। ऑलराइट मैम। देखिए, so as I said, depending upon the complexity of the question, बच्चे जल्दी कर लेंगे, आसान है, मुश्किल है, accordingly टाइम या डेडलाइन या असाइनमेंट है अगर, तो उसमें आप उनको जमा कर सकते हैं। सो लेट्स से, और एनी टाइम जो गिवन क्वेश्चन है उसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं, विच इज नोन एज क्विज एडिटर टूल। बाय यूजिंग क्विज एडिटर टूल, क्वेश्चन दिया है और ये उसके आंसर्स दिए हैं, इसमें 4 की बजाय आप 6 बना लीजिए, और प्रिंटर की जगह आप स्कैनर लिख लीजिए, और माउस की जगह आप जॉयस्टिक लिख लीजिए, ऑल दिस काइंड ऑफ एडिटिंग। Then the time allocated for question set from here like 60 seconds, 10 seconds, 5 seconds, और उसको आप दे दीजिए। तो जैसे हमने आपको अभी पर्शियन वाले से पूछ रहे थे, हमने क्या लिया, हमारा एक यूनिट था सिलेबस के हिसाब से इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच में जाके कंप्यूटर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, नाउ द क्वेश्चंस यू विल गेट वुड बी रिलेटेड टू ओनली एंड ओनली इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए यहाँ पे ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे, राइट? So this site, similarly, there are many websites and other tools, endless tools and techniques are available with the help of which teachers can make teaching and learning more effective, more understandable, more engaging, और आप एक professional teaching कर सकते हैं, quality teaching कर सकते हैं। So that's all from my side. Thank you so much for patient hearing. If there is any question or any doubt or anything you want. थैंक यू मैम। धन्यवाद मैम। मेरा एक प्रश्न है मैम। थैंक यू मैम। Thank Thank you. you. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you. It was a great session, ma'am. Thank you, ma'am. Very inspiring Thank you. session, ma'am. We मैम will एक छोटा apply सा all प्रश्न। these. थैंक यू मैम। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका Thank you, ma'am. ज्ञानवर्धक Thank you जानकारी देने के so लिए। much. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरा एक प्रश्न है मैम, थोड़ा सा सुन लीजिए उसको। जी। वैसे तो मैम AI और ICT की दुनिया बहुत आकर्षक है। मेरा एक प्रश्न है थोड़ा इस राइट टू प्राइवेसी को लेकर के, जी, कि जो हमारा डेटा कंपनियों के पास जाता है, क्या हम राइट टू प्राइवेसी का संरक्षण करते हुए इन सब में प्रवेश कर सकते हैं? इन सब जो गूगल क्लासरूम इत्यादि सब है ना, क्या कर सकते हैं? प्रिवेसी का, उस राइट टू प्राइवेसी का संरक्षण करते हुए अपना डाटा हमारा कहीं कोई शेयर ना हो, हमारी आईडी एड्रेस, ईमेल आईडी, हम इन सब टूल्स का यूज कर सकते हैं ना? अपनी आईडी नहीं यूज करना चाहते हैं आप? जी जी। तो अगर अपने नाम से आईडी ना बना के दूसरे से किसी दूसरे नाम से आईडी बनाते हैं तो यूज कर पाएंगे सारे टूल्स की? नहीं कर पाएंगे। नहीं ना, मतलब लोकेशन तो रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये जो राइट टू प्राइवेसी, हमारा डेटा शेयर होता है कंपनियों के पास जिन्होंने इन सब चीजों को विकसित किया है, तो उससे बचने का कोई उपाय है ना इसमें? एनी पार्टिसिपेंट सिक्योरिटी के उस पे कोई फीचर अटेंड कर रहा है? मंगलबार गोर्खा तराई डुवर्स संयुक्त
सर का सवाल है कि हम कैसे इन टूल्स को भी यूज करें और अपने डेटा की प्राइवेसी भी मेंटेन करें। दिस इज द क्वेश्चन, दीपक सर का क्वेश्चन है। तो कोई यहाँ पे सिक्योरिटी वाले टीचर, सिक्योरिटी में स्पेशलाइजेशन वाले हैं क्या? मैम सारा जैसे डेटा मैडम उनके पास होता है, कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। कुछ भी नहीं कर सकते। हम जो कर रहे हैं, कहीं जहाँ भी दीपक जा रहे हैं, जी, मोबाइल फर्स्ट हमारे ऑफ साथ ऑल है, सारा डेटा हम उनके पास अपना जा रहा है। स्मार्टफोन भी यूज कर रहे हैं, दीपक जी वो ऐसा क्या शाम पे डेटा है? कहाँ हमारी जाते हैं, सारी कहाँ क्या इंफॉर्मेशन करते हैं, ले सब रहा है, पता हम है बच नहीं सकते। तो बच्चे हमारा ऐसा डेटा कौन सा मिला की आपको बता हम मैडम। लैपटॉप भी यूज कर रहे हैं, वो भी Nothing सेम, would be वही कहीं ना कहीं से इंटरनेट से वही वही लीक अरे हो रहा है। कमान मैडम उनके हाथ में हमारी, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ पता है उन्हें, उनको कितने सब कुछ बजे कहाँ पता जा है। रहे हैं हम। So ये don't सब worry ट्रैक करना है about हमको that. मैडम। They already तो know कि फोन में आप तो आप सोच क्या रहे हो, लोकेशन आप ऑफ कर कर क्या लेते रहे हो। हो, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। फोन ये ऑफ तो नहीं करता, हम लोग ऑफ कर राइट टू देते हैं प्राइवेसी का लोकेशन। वायलेंस है ना मैम। फोन ऑफ नहीं करता है वो जो कंपनी होती है। कोई दूसरा यूएस चैनल भी में लग नहीं गया क्या सेव भाई? हो रहा है प्राइवेसी, तो हम लोगों का क्या है? हम लोग यूज करेंगे इसका तो वो बचेंगे नहीं किसी कीमत पर। हम बचिए सर। सर मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ दीपक सर। जी जी। जैसे आपने राइट टू प्राइवेसी की बात करी है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में जब इंस्टॉल करते हैं, तो हर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से पहले उनकी एक अपनी गाइडलाइन आती है ना। अब जैसे जो क्या हम होता है नहीं पढ़ते। कि अब जैसे क्या होता है कि हम लोग उसको पढ़ते नहीं, बस आया अलाउ 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 इंस्टॉल 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 ही दिखता है उस जी टाइम, जी। है ना। और दूसरी चीज जो पर्सनलाइज एड्स की बात की जा रही है, जैसे पर्सनलाइज ऐड होता है, आप उसको सिस्टम में जाके उसको डिसेबल कर सकते हैं। जैसे हम आप बात कर रहे हैं तो आपका सिस्टम सुनता है, फिर आपको उसी तरीके की ऐड दिखाएगा। वो उससे करने से भी नहीं होता है सर। नहीं सर, हो जाएगा। आप अच्छा सर, चलिए अच्छा दीपक सर, देखा जाए। जैसे सर ने मैं बताया आपका कि मैं वो आपको आई एग्री कर अलाउ नहीं देते भी करने जी से। मैम। राइट, सब पे आई एग्री कर दे रहे हैं, मगर हर ऐप की सेटिंग्स में कुछ ना कुछ सेटिंग्स इस तरह की हैं, कितना डेटा देना चाहते हैं, कितना प्राइवेसी हो। जैसे आपको बताया कि आपने टीचर हो, आपने बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे गलत लिख दिया, वो सबके साथ ऑनलाइन शेयर होना है कि ऑफलाइन शेयर होना है, या इसको प्राइवेट रखना है, सिर्फ इसी बार इस वक्त जो क्लास पढ़ा रहा हूँ उसी वक्त शेयर होना है। इस तरह के ऑप्शन है। कभी हमने आपको प्राइवेट वाला भी दिखाया था, छोटे छोटे ऑप्शन है, मगर हकीकत ये करने की ये सच में प्राइवेट हो जाता है कि नहीं, नॉट श्योर। जैसे आपने कहा कि वो प्राइवेट नहीं रहता है ना। सो ऑल दीज थिंग्स वी मस्ट सी। बहरहाल सिक्योरिटी इज अ सीरियस कंसर्न, सीरियस इशू, मगर सब में सेटिंग्स मिलती है, हर ऐप में ऐसी सेटिंग है, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली वो हो रही है कि नहीं, दैट आई हैव नेवर चेक कि भाई दूसरे एंड पे ऐसा हो रहा है। अब आपने गलत लिख दिया था, वो सबके पास शेयर कर दिया उसने, तो आप कहेंगे दिस टाइम ओनली, फॉर दिस क्लास ओनली, प्राइवेट टू मी ओनली, प्राइवेट टू दिस क्लास ओनली, है ना। इस तरह करके सब में ऑप्शन रहते हैं। थोड़ा बहुत अप टू सम एक्सटेंट वी कैन मेंटेन दिस, बट दिस इज रियली अ सीरियस प्रॉब्लम, आई मस्ट से। जी मैम। और एक चीज ये भी है ना कि हर सॉफ्टवेयर या हर क्या कहते हैं एप्लीकेशन परमिशन मांगता है। तो कुछ अनायास के ऐप होते हैं जो कि बेवजह का आपके कैमरे का एक्सेस मांगते हैं, माइक्रोफोन का एक्सेस मांगते हैं, आपके डॉक्यूमेंट का एक्सेस मांगते हैं, गैलरी का एक्सेस मांगते हैं। तो जिसपे उसका यूज ना हो तो उन सबको सेटिंग में जाकर सही तरीके से उसको डिसमिस कर देना चाहिए परमिशन। तो थोड़ा सा अपने आप को हम सेफ रख सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 100% सेफ रहेंगे, लेकिन 99% तो आप सेफ रहेंगे। तो यही छोटी छोटी चीज है सिस्टम में। 50%। नहीं सर, और देखिए 50%। तो ये जैसे आप ऑनलाइन क्विज या एग्जाम कंडक्ट करते हैं ऑनलाइन, तो वो बहुत सारे टीचर्स ने बताया कि एक स्टूडेंट ने 3 बार अपना क्विज जमा कर दिया, ठीक है, और जब टाइम खत्म हो गया उसके बाद भी जमा कर दिया। तो हर क्विज की सेटिंग में ऑप्शन होता है कि टाइम ओवर के बाद कोई भी नहीं जमा करेगा। एक और ऑप्शन होता है कि 2 बार कॉपी कोई नहीं जमा करेगा, ठीक है। तो सब चीज में सेटिंग्स रहती हैं, वी मस्ट नो, वी मस्ट सी केयरफुली। और फिर तो यहाँ पे क्विज भी जब शुरू शुरू में टीचर्स ने ऑनलाइन कराया तो यही हो गया, एक बच्चे ने 2 बार कॉपी, आंसर देख लिए, फिर कॉपी, आंसर देख सकते हो कि नहीं इसका भी ऑप्शन होता है। तो आपने क्विज तो फ्लोट कर दिया, उसमें वो वाला बटन ऑफ करना भूल गए थे, तो सब आंसर तो है स्टूडेंट्स के पास, है ना। सो वी मस्ट सी ऑल दीज थिंग्स, ईच एंड एवरी ऐप केयरफुली, और जो भी चीज की जरूरत ना हो, आपकी ड्राइव शेयर हो, ये हो वो, उसको डिनाई कर देना चाहिए। दैट इज व्हाट वी कैन डू। थैंक यू सो मच। मैम Thank you, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम।
मैम मैम गई। नहीं मैम अभी है आई थिंक। जी जी बताइए। मैम एक छोटा सा प्रश्न है, जैसे मूडल में इन शॉर्ट मैम प्लीज बताइएगा कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है एक्चुअली, मैं समझ नहीं पाया। अच्छा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जैसे एक कोई खास सब्जेक्ट ले लें आप, है ना। आप सर क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैम मैं साइकोलॉजी का हूँ। साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी में कई सारे और भी स्ट्रीम रहते हैं ना, नाम मैम लीजिए। डिसिप्लिन होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है और बायोलॉजी भी होती है और बेसिक फंडामेंटल बिहेवियरल साइंसेस भी होती है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी जी वगैरह। मैम, कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड होता है। हाँ हाँ। तो जितना कई बार टाइप ऑफ साइकोलॉजी में बहुत सारे टर्म्स हमने देखे और मैं इससे बड़ी दूर भागती हूँ, तो जैसे हम इंटेलिजेंस भी हम ही लोग पढ़ाते हैं। ठीक है। तो इस तरह की एक खास साइकोलॉजी में भी एक सब फील्ड, स्पेशलाइज फील्ड ले लिया, है ना। लेट्स से कॉग्निटिव साइकोलॉजी आपने ले लिया, उसकी स्पेसिफिक लर्निंग, इनहैंस लर्निंग करने के लिए जितने भी टूल्स, जितने भी सपोर्टिंग चीजें हो सकती हैं, उनको बेसिकली प्रमोट करता है ना। पूरा एक कॉग्निटिव साइकोलॉजी का को लर्न करने का, अंडरस्टैंड करने का पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें एक से ज्यादा टीचर, आपके कॉग्निटिव साइकोलॉजी के कोई एक्सपर्ट यूके में हो, यूएस में हो, उनसे राब्ता, उनसे शेयर, उनसे इंटरेक्शन, जो कि एक्सपर्ट एडवाइस सब्जेक्ट पे दे सके, उनके मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिकेशन हो, उनकी उस पर रिसर्च हो। इन एडिशन टू दैट, इस सब्जेक्ट में बच्चों की अटेंडेंस, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी पूरी मॉनिटरिंग, उनका रजिस्ट्रेशन, उनकी फीस, अगर ओपन इलेक्टिव है तो कितने बच्चे, उनको मोटिवेट करना और बच्चे लें, इस तरह का एक पूरा कंप्लीट सिस्टम एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे होता है। इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए। ओके मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। धन्यवाद मैम। धन्यवाद, थैंक थैंक यू यू मैम, बहुत सो इंटरेक्टिव और मच। सेशन था। धन्यवाद मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। और कोई सवाल है अविनेश जी, पूछ लीजिए। नहीं सर, अगला सवाल हो सकता है आपसे पूछे। हाँ हम भी। नहीं साइकोलॉजी का निखिल स्टूडेंट सर नहीं। आज तो कुछ बोले ही नहीं। आज सुनने का मन था, आज फास्ट बॉलर्स की पिच नहीं थी आज। कोई बात नहीं, अभी अगली क्लास है, 11 बजे है अभी। बस 20 मिनट 15 मिनट बाद। हाँ आते हैं, थोड़ा चार्ज होके आते हैं। अमित चाय सर भी काफी। पीने में तो टाइम बीत जाएगा। हाँ हाँ हाँ, चलिए लौटते हैं। जी सर, चले मिलते हैं। निखिल सर, निखिल सर। वो गए। अच्छा चले गए।